Hello, good evening, everyone. I hope I'm perfectly audible and visible to you. And if that is the case, please do let me know in the comment section that I'm perfectly audible and visible. So, today we are going to cover one of the most important topic for CLAT 2027. And this topic is extremely relevant because last year we celebrated 150 years of Vande Mataram, and after that, 150 years of Vande Mataram was also the theme for the 77th Independence Day that we celebrated on 26th of January 2026. Right. So if I'm perfectly audible and visible to you, you can inform me and we can start with our session. Yeah. So yeah, I'm perfectly audible and visible. So let's start with this particular session. And in this particular session, I will be explaining in detail various aspects of Vande Mataram which might be relevant for your examination, for your entrance examination. So let's start with this particular session now. So again, this is again a co-weighted GK question bank, and today we were checking the stats that a lot of students are purchasing this particular course, GK question bank. So if you are one of the students who find it difficult to crack current affairs and GK, this particular question bank could be of great help for you. So you can, you can actually look towards this particular batch, and students who are yet to start their 2028 preparation, they can start with this Prarambh 2028 batch. This batch was launched last week, so a lot of classes have not taken place. So anyone who wants to start their preparation or kickstart their preparation for CLAT 2028 and ELIT 2028, they can definitely subscribe to this particular batch, and you can use my code, that is ABHAY, for this particular subscription. And after using my code, that is ABHAY, you will get an additional discount of 10%, right? So this is all about. Now these are two student support contact number given on your screen. If you have any sort of doubt or you find it difficult to start your CLAT preparation, then you can definitely reach out to us. One of the support member will always respond to your queries. So that is one aspect. Now let's kickstart our session. How a new law aims to place Vande Mataram on par with Jana Gana Mana. So now students, when we talk about Vande Mataram and Jana Gana Mana, there is a very basic difference between these two titles. Vande Mataram is our national song, whereas Jana Gana Mana is national anthem. Now there are various aspects related to this particular topic, a lot of factual information which might be very much relevant for your examination. राइट सो अभी क्या है कि मॉनसून सेशन 20th of July 2026 को स्टार्ट हो चुका है, एंड यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह इज एक्सपेक्टेड टू टेबल अ बिल टू मेक सर्टेन चेंजेस इन द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट ऑफ 1971. And by making this relevant change, the government is aiming to modify certain aspects of prevention of insults to National Honors Act of 1971, and it will also bring national song under the ambit of this particular amendment, right? So this is the latest change. A lot of things have taken place, a lot of changes have taken place with reference to Vande Mataram since 2025. कुछ लॉ में भी चेंज किया गया है, कुछ स्टेटस में भी चेंज किया गया है, कितने पैसेजेस, कितने स्टैंजाज अब हमें गाने हैं, पब्लिक गैदरिंग्स में अब कंपलसरी हो गया गाना नेशनल सॉन्ग, राइट? सो वी विल कवर ऑल दोज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? सो वी कैन स्टार्ट विद आवर सेशन नाउ, and I hope I'm perfectly audible and visible to you. Now, how a new law aims to place, so basically equality in statutory legal protection. So students, let's talk about one important fact. अभी हम फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं जा रहे हैं, 51AA में नहीं जा रहे हैं, जिसमें नेशनल एंथम के लिए अपना रिस्पेक्ट शो करना, नेशनल एंथम के टाइम पे खड़े होना, all those things have been given under 51AA, which is the part of fundamental duty, but national song को वहां पर नहीं दे रखा, इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा बाद में डिस्कशन करेंगे, राइट? बट व्हाट इज द करंट लीगल गैप? So students, when we talk about this particular topic, we have to be very much concerned about section 3 of the Prevention to National Honors Act of 1971, because section 3 of this 1971 act, preventing the singing of national anthem Jana Gana Mana or causing disturbance to an assembly engaged in such singing is a criminal offence punishable by up to 3 years of imprisonment, a fine, or both. So basically, what is the current status, students? Again, it's a very relevant information. So if any particular person is
causing disturbance to an assembly engaged in singing of national anthem. It is a criminal offence punishable with a punishment of up to 3 years or fine or both. Let's take one example. आप असेंबली में सुबह सुबह खड़े होकर के नेशनल एंथम गा रहे थे और अचानक कोई इंसान आकर के, आप जब वो प्रोसेस में थे नेशनल एंथम गाने के, आप किसी ने आकर के वेहमेंटली डिस्टर्ब कर दिया. सो दिस पर्टिकुलर एक्ट ऑफ द पर्सन वुड बी कंसीडर्ड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस अंडर सेक्शन 3 ऑफ द 1971 एक्ट, एंड दैट पर्सन कैन बी पनिश्ड with a maximum punishment of 3 years, up to 3 years, and also a fine, or it may attract both the things. या तो आपको maximum 3 years का imprisonment हो सकता है, या तो fine लग सकता है, या तो आपको दोनों चीजें award की जा सकती हैं. Basically, so this is the current standing. Now the government is trying to bring वंदे मातरम अंडर द सेम प्रोटेक्शन. अभी ये जो प्रोटेक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारे नेशनल एंथम जन गण मन को मिली है, बट गवर्नमेंट ये सेम प्रोटेक्शन वंदे मातरम को भी प्रोवाइड करना चाहती है. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, the proposed amendment. The 2026 bill proposes to explicitly include the national song Vande Mataram within the ambit of section 3. So that we have already discussed that the recent amendment or the proposed amendment will change section 3 of the 1971 act, and it will also include national song in the ambit of section 3. So now national anthem and national song will have the same status, right? This places Vande Mataram on equal penal footing with Jana Gana Mana against intentional insults or disruption. So अब basically national anthem और national song का जो status है that would be of same, that would be at same level. पहले जिस तरीके से मैक्सिमम 3 years का imprisonment fine या दोनों चीजें अवॉर्ड की जा सकती थी if somebody is creating a disturbance or causing some sort of disruption to an assembly which is singing the national anthem, सेम लेवल का पनिशमेंट अट्रैक्ट होगा नेशनल सॉन्ग के लिए भी, राइट? सो आई विल जस्ट चेक कि अगर आपके कोई डाउट्स वगैरह हो तो हम उन डाउट्स वगैरह को भी सॉल्व करते चलें, रिजॉल्व करते चलें, बिकॉज दिस इज वन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जामिनेशन. एंड एज आई कैन सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू गाइज हैव नो डाउट्स सो व्हाटसोएवर. सो विल कीप ऑन प्रोसीडिंग, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं फ़ोन अपना एक्चुअली पीछे रख लेता हूँ तो मैं आपके डाउट्स नहीं देख पाता हूँ, तो आप लोग पैनिक की सिचुएशन में पहुंच जाते हैं, राइट? कि वाई सर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू आवर क्वेश्चन. सर विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू योर क्वेश्चन, यू जस्ट हैव टू शो अ बिट ऑफ पेशेंस, दैट्स इट, राइट? नाउ let's talk about the statutory backing to the Constituent Assembly intent. So when we talk about the entire journey of Vande Mataram, students, there is one of the most relevant information is that on 24th of January 1950, the then President of the Constituent Assembly, Rajendra Prasad, declared that Vande Mataram should be honored equally and hold equal status with Jana Gana Mana. So this is the same day, January 24th, 1950, when Vande Mataram was adopted as national song. So please remember this particular date as well, 24th of January 1950. It is extremely relevant for your examination, right? अगर आपको कभी ऑडियो या विजुअल्स में कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में उसको तुरंत बता दीजिएगा, सो दैट आई कैन improve that thing as soon as possible. So on 24th of January 1950, the then President of the Constituent Assembly, Mr. Rajendra Prasad, said that national song Vande Mataram will have equal status as of the national anthem Jana Gana Mana. However, while Jana Gana Mana received constitutional reflection and penal backing under section 51AA and the 1971 Act, Vande Mataram was not explicitly mentioned in the Constitution or the 1971 Act. The new bill bridges this long-standing statutory gap. So India got independence on 15th of August 1947 and we became a republic on 26th of January 1950. And since 26th of January 1950, we have to understand one thing, that since 26th of January 1950, a lot of work has been done in order to protect our national honor. So, but
दिस स्टेटस विच वाज गिवन टू वंदे मातरम, उसको कभी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या कॉन्स्टिट्यूशनल रिफ्लेक्शन उसको नहीं मिला। सेम चीज नेशनल एंथम को मिल गई, जनगण मन को, जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 51A वाज अमेंडेड रिस्पेक्टिवली, और फिर क्या हुआ, नेशनल एंथम को गाना कंपलसरी कर दिया गया। इट वाज अ काइंड ऑफ, इट वाज मेड अ ड्यूटी, इट वाज मेड अ फंडामेंटल ड्यूटी टू सिंग नेशनल एंथम। बट ये जो स्टेटस था ये कभी भी नेशनल सॉन्ग को नहीं मिल पाया, और इसी स्टेट इक्वल स्टेटस को देने के लिए मिस्टर शाह विल ब्रिंग a particular bill to amend the 1971 वाला एक्ट। ठीक है, now moving on to the next point. Executive guidelines versus legal provisions. So the Ministry of Home Affairs issued, so basically this year a lot of important development has taken place. Government ने starting में एक executive order pass किया था, they have passed executive orders, these guidelines detailing the authorized lyrics written by Bankim Chandra Chatterjee and specifying formal occasion for its mass singing, unfurling the national flag, state ceremonial functions and daily community singing in schools. So earlier this year the Ministry of Home Affairs passed an order and they made it compulsory to sing national song at every public gathering. जो भी पब्लिक फंक्शंस होंगे, स्टेट फंक्शंस होंगे या स्कूल असेंबलीज जो होंगी, वहां पर नेशनल सॉन्ग को गाना कंपलसरी था, एंड द लिरिक्स विच वर रिटन बाय और ऑथर्ड बाय बंकिम चंद्र चैटर्जी, सिर्फ उन्हीं लिरिक्स को गाना कंपलसरी किया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. When challenged in the Supreme Court by Muhammad Sayyid Noori, a three-judge bench headed by Chief Justice of India Suryakant dismissed the petition as premature, noting that existing executive directives are advisory. The 2026 Amendment Bill transforms protection against intentional insult from mere executive guideline into binding statutory law. So earlier this year, when this particular order was issued बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो उस टाइम पर एक पिटिशन किसी ने फाइल किया और पिटिशन में बेसिकली ये डिमांड किया जा रहा था कि इस पर्टिकुलर ऑर्डर को सस्पेंड कर देना चाहिए. बट एट दैट टाइम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्टेड वेरी स्मार्टली एंड इट सेड कि भाई अभी ये जो इज रेजिंग दीज इश्यूज in parliament is necessary at this point of time. See, when we talk about this entire thing related to national song, it was going on for a very long period of time. So it was pre-decided that in this year's monsoon session, the government will introduce the bill to make it a penal offence कि अगर कोई national song गाने के टाइम पर किसी तरीके का disturbance create कर रहा है, then it can attract a maximum punishment of up to 3 years or fine or both, right? So अब basically क्या होगा कि 2026 amendment के बाद में it will become a statutory law. Then it can be challenged क्योंकि फिर वो एक advisory guideline नहीं रहेगा. Now it will become a law. तो फिर उस टाइम पर फिर से इसको चैलेंज किया जाएगा. इट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटायर जर्नी ऑफ वंदे मातरम. अगर कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज आपसे एक पैसेज पूछते हैं, एक पैराग्राफ पूछते हैं, लेट्स से 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम से, तो यहां से आपको इजीली 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. सो ऑन 7th of November 1875, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चैटर्जी composes Vande Mataram in Sanskritized Bengali at Shunsura, West Bengal. So compose कब किया था? अब याद रखिएगा, it was composed as a poem compose किया था बंकिम चंद्र चैटर्जी ने 7th November 1875 को. फिर 1882 में क्या हुआ था? The poem is formally incorporated into बंकिम चंद्र's landmark patriotic novel आनंद मठ. अब 1875 में इसको कंपोज किया गया था. 1882 में पहली बार इसको फॉर्मली पब्लिश किया गया एक पोएट्रिक नॉवेल में. उस नॉवेल पैट्रियोटिक नॉवेल में, इट वाज अ काइंड ऑफ पोम. पैट्रियोटिक नॉवेल का नाम क्या था? आनंद मठ. तो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. इट वाज कंपोज्ड इन द ईयर 1875 बट फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज पब्लिश्ड इन आनंद मठ इन 1872. So this is the second important development with respect to national song. Now the next important development, students, took place in 1896. Now this is a very important development. Now what happened in 1896? Anyone who would like to answer the question? What happened in 1896? Anyone who is willing to answer what happened in 1896 with reference to national song? So with reference to national song, students, in 1896 it was sung for the first time. It was sung at a public gathering. रविंद्रनाथ टैगोर ने 1896 में
जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था कैलकाटा में, तो उस टाइम पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको सबसे पहली बार किसी पब्लिक गैदरिंग में गाया था. So please remember this particular information that Vande Mataram was sung for the first time at a public gathering in 1896 during the annual session of Indian National Congress held in Kolkata. Right. Then 1905 to 1907, the relevance of Vande Mataram with the Swadeshi movement. So during the anti-partition of Bengal movement, so Bengal partition के बाद जो anti-partition movement चल रहे थे, Vande Mataram becomes the official slogan and rallying cry of Indian nationalists in 1907. Madam Bikaji Kama unfurls the early Indian flag in Stuttgart, Germany, emblazoned with Vande Mataram. Now, this particular information is extremely relevant for another set of information which is extremely relevant for your examination. अब याद ये रखना है कि जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस पर्टिकुलर पार्टीशन के फेवर में नहीं थे. तो वो लोग क्या कर रहे थे, जगह जगह पे रैलीज ऑर्गेनाइज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, और उन प्रोटेस्टर्स का मेन क्राई सॉन्ग बना वंदे मातरम. और फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज रिमेंबर दिस, फॉरेन सॉइल पे सबसे पहली बार मैडम भिखाजी कामा ने इंडियन फ्लैग अनफर्ल्ड किया था, और उस स्टटगार्ट जर्मनी में, जिसपे वंदे मातरम था लिखा हुआ था. राइट. सो प्लीज रिमेंबर दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन एज वेल बिकॉज दैट माइट बी रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. Then November 20th, 1909, Sir Aurobindo Ghosh translates the first two stanzas into English as "Mother, I bow to thee" in this weekly publication Karma Yogini. Right? So ये भी आप लोगों को याद रखना है कि 1909 में सर औरबिंदो घोष ने, श्री औरबिंदो घोष ने क्या किया था. अब ये इंफॉर्मेशन भी याद रखिएगा. 1875 में कंपोज किया, 1882 में पब्लिक गैदरिंग, 1882 में आनंद मठ में पब्लिश हुआ, 1896 में पब्लिक गैदरिंग में गाया गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ 1907 में, जब मैडम भिखाजी कामा ने स्टटगार्ट जर्मनी में फ्लैग अनफर्ल किया. फिर 1909 में क्या हुआ, श्री औरबिंदो घोष ने पहले जो 2 स्टैंजास थे उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश किया अपनी वीकली पब्लिकेशन कर्म योगन में. Right. So all these facts are extremely relevant for your examination given the background कि इस बार का जो रिपब्लिक डे था उसका थीम भी था 150 years of Vande Mataram. Now student, let's move to the next important development, and after like almost 28 years, what happened in 1937, that the Indian National Congress formally adopted the first 2 stanzas of Vande Mataram as the official national song, omitting later stanzas containing complex religious imagery to ensure universal inclusivity across religious communities. So what happened, students? Now this is going to be a huge debate. Now this debate is absolutely clear that in 1937, the Indian National Congress adopted the first 2 stanzas as the national song. क्योंकि हम हमेशा से एक बहुत डाइवर्स कंट्री रहे थे, एंड इट बिकम्स एक्सट्रीमली रेलेवेंट टू बैलेंस आउट थिंग्स. एंड इन ऑर्डर टू अचीव द सिमिलर ऑब्जेक्टिव्स, द इंडियन नेशनल कांग्रेस अडॉप्टेड द फर्स्ट 2 स्टैंजास ऑफ वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग. क्योंकि जो बाद के 4 स्टैंजास थे उसमें कुछ रिलीजियस स्कल्पचर्स का या कुछ रिलीजियस गॉड्स एंड गॉडेसेस का ग्लोरिफिकेशन था. सो द इंडियन नेशनल कांग्रेस सेड कि इट विल इवेंचुअली dilute the idea of brotherhood, so they decided to only adopt first 2 stanzas as national song in 1937. Then the next important development with respect to national song, on 24th of January 1950, that we have already discussed, that post independence on 24th of January 1950, Dr. Rajendra Prasad, the then president of the Constituent Assembly of India, adopted Vande Mataram as the national song. Right. So we have seen the important developments that have taken place in the first 75 years of, in the first 75 years since Vande Mataram was composed by Bankim Chandra Chatterjee. तो पूरी टाइमलाइन याद रखनी है. 1875, 1882, 1896, 1907, 1909, 1937 एंड 1950. एक टाइमलाइन आप बना लेंगे और इस पूरे टाइमलाइन पे आप यू कैन इजीली पॉइंट आउट थिंग्स. तो आपका ऑलमोस्ट आधे पैराग्राफ में आपकी सारी टाइमलाइन आपकी कंक्लूड हो जाएगी. याद रखिएगा, इस बार जो हमारा 77th इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डे हमने सेलिब्रेट किया, उसका थीम भी था 150 years of वंदे मातरम. Right. So these are the informations which are extremely relevant for your examination, and you have to keep a note of all these informations. Right. Now let's talk about the legal and judicial developments with reference to
national song. So in 1971, the Parliament of India passed the Prevention of Insults to National Honors Act of 1971, and Section 3 of the same act basically अगर कोई इंसान नेशनल एंथम गाने के टाइम पे किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कोई असेंबली जो नेशनल एंथम गा रही है उसमें किसी तरीके का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, देन it was made a criminal offence under section 3 of the Prevention of Insults to National Honors Act of 1971. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट. सो अब ये सिमिलर स्टेटस वंदे मातरम को भी गवर्नमेंट देने जा रही है 2026 में बाय ब्रिंगिंग एन इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन द 1971 एक्ट, एंड दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट विल बी ब्रॉट बाय नन अदर देन मिस्टर Amit Shah, the Union Home Minister, right? Then in 1986, Bijoy Emmanuel versus State of Kerala, the Supreme Court rules that standing respectfully in silence during the national anthem satisfies respect upholding fundamental rights under Article 19(1)(a) and Article 25 Clause 1. So Bijoy Emmanuel का केस बहुत फेमस है, 1986 का केस है, और इस केस के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली ये बोल दिया था कि भाई अगर कोई इंसान नेशनल एंथम गाने के टाइम पे वो रिस्पेक्टफुली खड़ा हुआ है, then it satisfies the requirement that that particular person is somehow, it is a kind of it is a show of respect अगर वो बहुत respectfully खड़ा हुआ है national anthem के टाइम पर, right? So this is Bijoy Emmanuel versus State of Kerala, because we have to, at the same time, we have to protect Article 19(1) Clause A, 19 Clause 1 Subclause A, which talks about freedom of speech and expression, and Article 25 Clause 1, which talks about freedom to practice, profess the religion of your choice. Then we have 2014 judgment Salman versus State of Kerala. The Kerala High Court distinguishes between merely choosing not to sing versus making noise or causing an intentional disturbance during anthem renditions under Section 3. So now the Kerala High Court has gone a step ahead, और उन्होंने बेसिकली ये भी डिफाइन कर दिया कि इंटेंशनल न्यूसेंस क्रिएट करना एक्चुअली में होता क्या. लाइक लेट्स टेक वन एग्जांपल कि असेंबली में नेशनल एंथम चल रहा था एंड देयर इज अ पर्सन एक्स, उसने क्या किया, अलग अलग तरीके की आवाजें निकालना शुरू कर दिया, राइट? So this is something which is not acceptable, and this is a criminal offence under Section 3 of the Prevention of Insults to National Honors Act of 1971, and the same thing was asserted by the Kerala High Court in Salman versus State of Kerala. Now moving on to the next important development. So early 2026 के जो executive directives थे उनको हम already discuss कर चुके हैं. Now please, I have this one question to you from this specific topic, and this is the last question which I'd like to put forward before you guys. So we know this, that the national anthem, there is a time limit that you have to sing, one has to sing the national anthem within 52 seconds. तो जो 6 स्टैंजाज हैं नेशनल सॉन्ग के, उनको गाने के लिए गवर्नमेंट ने कितना टाइम प्रिस्क्राइब किया? एनीवन वुड लाइक टू आंसर द क्वेश्चन? कितने टाइम में नेशनल सॉन्ग को हमें गाना है? कितने टाइम में? व्हाट इज द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट? सो द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट इज 190 seconds, right? So this is also a relevant information, please remember this. Now moving on to the next point. So अब ये जुलाई 2026 में बिल आएगा, इसमें चेंजेस होंगे. अब ये पूरा का पूरा बेसिकली टाइमलाइन है 1875 से स्टार्ट होकर के, ठीक है, 1875, फिर 1875 में कंपोज किया गया, 1882 में पब्लिश हुआ आनंद मठ में, 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिसाइट किया इंडियन नेशनल कांग्रेस के एनुअल सेशन, जो कि हुआ कहाँ पर? कोलकाता में. 1905 से लेकर के 1907 के बीच में स्वदेशी मूवमेंट जब चल रहा था, तो उस टाइम पे स्टटगार्ड में मैडम भिखाजी कामा ने अनफल किया था फ्लैग जिस पे वंदे मातरम लिखा था. 1909 में सर ऑरबिंदो ने पहले 2 स्टेंजास को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था. 1937 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया to adopt first 2 stanzas as national song on 24th of January 1950. The then President of the Constituent Assembly of India, Mr. Rajendra Prasad, adopted the first 2 stanzas as the national song. So this is the timeline जिसके बारे में मैं बात कर रहा था. 1971 में Prevention to National Honors Act 1971 पास किया गया, जिसके परव्यू से नेशनल सॉन्ग को बाहर रखा गया. फिर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया 1986 में. 2026 में 2 इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए, जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का डायरेक्टिव है कि सारे के सारे जो 6 स्टैंजास हैं उनको गाना कंपलसरी है विद इन 190 seconds, right? So if anyone has any sort of question from this particular topic, you may ask your question. Otherwise we will move to the next point.
Anyone, any specific doubt from this particular topic? And please start asking questions. I mean, I appreciate a lot of questions, right? Because वो questions basically आप का एक clear understanding बताते हैं कि how much do you actually get from the topic. और अगर मुझे top 10 topic from my, this is my personal opinion, that if I have to choose top 10 topics for CLAT 2027, this is going to be one such topic जो उस list में हमेशा रहेगा, क्योंकि हर महीने कुछ ना कुछ वंदे मातरम को लेकर के डेवलपमेंट हुआ है. हमने 150 ईयर्स कंप्लीट किए गाइस, कम ऑन. तो ये ऑटोमेटिकली आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट हो जाता है. एंड ट्रस्ट मी ऑन दैट व्हेन आई एम सेइंग दिस, वंदे मातरम 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक फॉर द कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज, क्योंकि बहुत सारा लीगल डेवलपमेंट भी हुआ है. 190 सेकंड्स में गाना, ये भी सब बेसिक फैक्ट्स याद रखिएगा, क्योंकि बेसिक फैक्ट्स ही कई बार ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट्स को नहीं आते हैं, राइट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट. So now finally let's talk about this, and we won't be giving much of our time to this particular topic. 3-4 मिनट में करके इसको खत्म करते हैं, because no one knows कि भाई ये war खत्म कब होगा. This war has been going on since 28th of February 2026, when United States of America started Operation Epic Fury against Iran, and in response to that, Iran started Operation True Promise 4 against the Israeli government, or against the people of Israel and United States of America and their establishments in the Middle Eastern countries. अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये वॉर स्टार्ट हुआ, स्टूडेंट्स फटाफट ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर दिया. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बेसिकली इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान टू Persian Gulf to Gulf of Oman, and this particular sea route is responsible for the 20% of the global oil trade, right? तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो global crude oil prices थे, they started to rise like anything. और उसके बाद subsequently जो next important development हुआ वो ये था कि that in April 2026 the first round of peace talks took place in Islamabad, जिसको हम बोलते हैं Islamabad peace talks, and those talks failed. Nothing substantial came out of that particular talk. But after a lot of negotiations and mediations, finally a memorandum of understanding was signed between Iran and United States of America in Geneva, Switzerland on 21st of June 2026, जहां पर दोनों कंट्रीज ने ये चीज डिस्कस की कि हम 60 डेज तक किसी भी तरीके का वॉर नहीं करेंगे, किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, so that we can discuss a long term peace deal. But as we know that the element of trust is always missing when it comes to Iran and United States of America, and because of certain miscommunications the war started again. And now day before yesterday, the president of Iran, Mr. Masoud Pezeshkian, declared that they are fighting a full scale war against America, and the citizens of Iran must be ready to bear the consequences and the repercussions of the same war. Right now Pakistan has started to negotiate again. Now Pakistan leadership is playing a very vital role when it comes to this bilateral conflict going on between Iran and United States of America. They are acting as a mediator. इसीलिए बीच में कुछ लोगों ने शहबाज शरीफ के लिए नोबेल पीस प्राइज डिमांड करना शुरू कर दिया था. अब लोगों को इतना पता होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप के रहते हुए डोनाल्ड ट्रंप जिस पीस डील पर साइन करेगा, उस पीस डील की नेगोशिएशन के लिए किसी और को तो नोबेल वो मिलने नहीं देगा. बट that is something which is not relevant. But again, the point that we have to understand here is that again Pakistan have started to mediate this particular war कि किस तरीके से इस कॉन्फ्लिक्ट को हम खत्म कर सकते हैं. एंड टू अचीव द सेम ऑब्जेक्टिव्स, ईरान के जो इंटीरियर मिनिस्टर थे एस्कंदर मोमिनी, वो पाकिस्तान पहुंचते हैं 21st of July 2026 को, एंड इन पाकिस्तान ही मेट चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर. राइट, रावलपिंडी में इनका ये मीटिंग हुआ है आसिम मुनीर के साथ में. Now, core diplomatic objective, the meeting aims to restore the June memorandum of understanding. So basically, इस particular meeting का जो core objective है students, that objective is very simple कि वापस से United States of America और ईरान इस war को रोक दें. They can have they can get a time of 10 days for themselves, और उन 10 दिन में basically वो जो June 21st 2026 को जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नेगोशिएट हुआ था, उस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को वो लोग वापस से फॉलो कर सकें, सो दैट दे कैन नेगोशिएट अ लॉन्ग टर्म पीस डील. राइट, सो दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर विजिट ऑफ द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ ईरान टू रावलपिंडी. राइट, कॉज फॉर रिस्ट्रेन, सो द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिस्टर शहबाज शरीफ हैज अर्ज्ड बोथ, दैट इज वॉशिंगटन एंड तेहरान, कि भाई रिस्ट्रेन करिए, फाइट नहीं करना है, यू आर फाइटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम नाउ, दिस इज नॉट नीडेड, यू शुड नेगोशिएट ऑल दोज थिंग्स. सो ये सारा रिक्वेस्ट है
Pakistan and Qatar are playing a very important role in these mediations, and let's see where this will go. And eventually I'm pretty hopeful that something positive will come out of this, because at every time when there are some sort of negotiations that are going on or that are taking place, I'm always very hopeful that something positive will come out of these kind of peace negotiation. The recent joint proposal, so by recent joint proposal वही है 2 week का सीज फायर होगा, 10 दिन का सीज फायर होगा, वो लोग बोल रहे 2 weeks का सीज फायर होगा, और जुलाई 9 को जब ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था उसके पहले जो पोजीशन थी उसको रीस्टोर करना है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज 10 दिन से लगातार अभी यूएस सेंटकॉम, यूएस सेंट्रल कमांड है, वो कंटिन्यूअसली अटैक कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1/5 ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल सप्लाई, वहां पर वापस से सारी चीजें हॉल्ट कर दी गई, और अब तो हाउदीज ने रेड सी भी ब्लॉक कर दिया है, राइट। सो द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल आर एक्सपेक्टेड टू रीच $90 पर बैरल, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में $4 पर गैलन ऑलरेडी प्राइस पहुंच चुका है गैसोलीन का। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है, एवरी टाइम ईरान किल्स एन अमेरिकन सोल्जर दे विल पे फॉर दैट किलिंग मेनी टाइम्स ओवर। सो दैट इज अगेन अ काइंड ऑफ स्टेटमेंट दैट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, मिस्टर डोनाल्ड Trump, right? So this is something, this war is never ending, and this is going to be one of the most important topic for CLAT 2027, right students? So this is all about today's session. I hope you have liked it, you have find it relevant for your examination, and that's it from my side. Thank you so much for watching this particular session, and with this I'll take your leave now, and we'll see you we'll see you tomorrow at the same time. Till then, just take a good care of yourself and people around you. Keep on preparing for your examination. Don't think much about CLAT 2027 or 2028. ठीक है, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उन पे कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हमें अपनी प्रिपरेशन हर समय टॉप नॉच रखनी है। सो दैट्स इट। और इस बार तो 120 क्वेश्चंस ही हैं, 5 सेक्शंस ही हैं, तो जो लोग 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग को अनअफेक्टेड तरीके से प्रिपरेशन करना है, और 2028 वाले लोगों को भी उसी तरीके से प्रिपरेशन करनी है जैसे 2027 के एस्पिरेंट्स इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ऑन दैट नोट विल रैप टुडेज सेशन। थैंक यू सो